So my dear friends, the wait is finally over and Hello everyone, warm welcome to Regulatory Bodies YouTube channel by Testbook. My name is Madhav Sir. I welcome you all in a very important session. So today we will be discussing the finance current affairs and I'm pretty sure you are going to enjoy this session as well in the same manner as you're enjoying the previous sessions also. So as you all know, the notification is out. 18th of October is the D-Day and I'm pretty sure you all are doing really very well. But if you need any guidance, any suggestion regarding your preparation, you can write your doubts in the comment section itself after the video or after this live session so that I can take each and every doubt of yours. If I feel that there is a requirement to come up with a video for that specific doubt, I'll do that as well. So guys, today we will be discussing the finance current affairs for 16th to 17th of September. And this session is going to be really very important for you all guys. So before we start the discussion, just give me yes sir in the comment section so that we can begin the discussion without any further delay. If everything is fine, we are good to go. Just give me yes sir so that we can begin the discussion. Okay, as you all know, we will be revising the questions based on the previous day news as well, but that will be in the end of this session. But now we will start with today's news, and today's news is really very important and it is around PCA. I hope you all have heard about prompt corrective action. So we have an update related to the same. But before I move to that, I have one more update, or I would say the master direction presented by RBI, that is on very important aspect, that is payment aggregator. So we will be starting with the term that is payment aggregator and then we will be moving ahead. So payment aggregator related RBI has come up with a master direction and this master direction is really very important फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. जो चेंजेस हुए वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जितनी डिटेल में मास्टर डायरेक्शन प्रेजेंट की गई है वो पूरी की पूरी डिटेल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर एरिया से पूछे जाने के चांसेस एंड ऑब्वियसली आरबीआई सर्कुलर्स, चाहे मैं मास्टर डायरेक्शन की बात करूं या नोटिफिकेशन की, दे ऑल आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो मेरा सबसे पहले आप सभी से एक क्वेश्चन है, गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पेमेंट एग्रीगेटर? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट इज पेमेंट एग्रीगेटर, तो उस केस में आपका क्या आंसर होगा? गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. पेमेंट एग्रीगेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म और ये काफी बार न्यूज में भी रहता है एंड यू आर connected or you are, I would say, surrounded with the payment aggregators while performing your day-to-day operations. So basically what is a payment aggregator? So payment aggregator की अगर मैं बात करूं तो payment aggregator एक critical link है in the digital payment ecosystem जो कि allow करता है एक small या medium businesses को ताकि वो accept कर सके payment from the public. One second guys. Okay, so payment aggregator allows the small and medium businessman or businesses to accept payments from various formats or from the various electronic payment scenarios. So in that particular case, if someone asks me how you define the payment aggregator, मेरा आंसर बड़ा सिंपल होगा सर. पेमेंट एग्रीगेटर एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जो फैसिलिटेट करता है ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेंस फॉर द मर्चेंट्स इंस्टेड ऑफ ईच मर्चेंट टाइंग अप विद द बैंक एंड देन द पेमेंट नेटवर्क इंडिविजुअली. वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली एक पेमेंट एग्रीगेटर से टाई अप करते हैं और वो जो पेमेंट एग्रीगेटर है वो आपको अलाउ करता है दैट यू कैन एक्सेप्ट द फंड्स फ्रॉम योर customers either through UPI or card payment or maybe internet banking and whatnot. So merchant और customer के बीच में जो link है which allows the customer to make the payment through different venues and which allows the merchant to accept the payment from the customer is basically payment aggregator. अगर मैं इसको थोड़ा सा
आपको एक्सप्लेन करूं ताकि मैं इसकी निटी-ग्रिटीज को फिर मैं धीरे धीरे करके आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर सकूंगा। तो ये कुछ ऐसा सा दिखता है अगर आप ध्यान देंगे तो। सबसे पहले अगर हम बात करें कस्टमर की, सर एक कस्टमर है और वो कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। अब मान लो आप बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, मिंत्रा की, ये तो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मान लो एक बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, एक छोटा सा बिजनेस है, उसने ऑनलाइन या इवन ऑफलाइन, ऑनलाइन या इवन ऑफलाइन अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। अब वो चाहता है कि जो कस्टमर उसके पास आए, द कस्टमर शुड मेक द पेमेंट एंड ही वांट कि कस्टमर कैन मेक द पेमेंट इन व्हाट एवर मैनर, इन ऑन व्हाट एवर आई वुड से प्लेटफॉर्म दे आर कैपेबल ऑफ। सो नाउ इन दिस केस द मर्चेंट, दिस इज आवर मर्चेंट। सो मर्चेंट को क्या करना पड़ेगा सर? मर्चेंट को टाई अप्स करने पड़ेंगे, किसके साथ? सो मर्चेंट को बैंक्स के साथ टाई अप करने पड़ेंगे, यूपीआई के लिए यूपीआई रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करने के लिए अदर अदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप, और कार्ड पेमेंट अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप। अब ऐसा नहीं है। अब क्या करे ये जो मर्चेंट है, ये मर्चेंट टाई अप करेगा किसके साथ? एक पेमेंट एग्रीगेटर के साथ। ये टाई अप करेगा किसके साथ? एक पेमेंट एग्रीगेटर के साथ। और ये जो पेमेंट एग्रीगेटर है, ये जो बेसिकली पेमेंट एग्रीगेटर है सर, ये पेमेंट एग्रीगेटर प्रोवाइड करेगा डिफरेंट डिफरेंट वेन्यूज टू द कस्टमर। जब भी कभी आप ऑर्डर करते हैं, जब भी कभी आप कुछ परचेज करते हैं, वहां पे ऑप्शन आता है हाउ यू वांट टू पे। यू पे फ्रॉम यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, और मे बी यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, और मे बी पेइंग थ्रू दी वॉलेट। तो ये जो आपको सारी की सारी ऑप्शंस मिली है ना, ये ऑप्शंस आपको मर्चेंट के बिहाफ पर किसने दी है? पेमेंट एग्रीगेटर ने दी है। और जैसे ही लेट्स सपोज यू हैव चोजन यूपीआई, तो यूपीआई के थ्रू जब पेमेंट होगी तो पेमेंट एग्रीगेटर इस पेमेंट को सेटल डाउन करके मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। लेकिन इन ऑर्डर टू perform this entire transaction there is a third party involved which we call it as escrow account, जो कि इन्वॉल्व है। और ये एस्क्रो अकाउंट इन ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। और उसके अलावा एक और पार्टी इन्वॉल्व होगी, सो दैट इज अ बैंक, जो कि पेमेंट एग्रीगेटर के बिहाफ पर पहले पेमेंट रिसीव करेगी और फिर रिसीव की गई पेमेंट रिस्पेक्टिव मर्चेंट के अकाउंट में क्रेडिट करेगी। तो कुछ इस तरह से आपका पेमेंट एग्रीगेटर काम करता है। अगर आप और ध्यान से इस सिनेरियो को देखें तो कुछ ऐसा दिखता है, जैसे ही कस्टमर ने पेमेंट करने के लिए ऑप्शन सेलेक्ट की, लेट्स से यूपीआई, तो जो पेमेंट एग्रीगेटर है वो ऑथोराइज करेगा रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट ऑथोराइज होने के बाद जो पार्टनर बैंक है आपके पेमेंट एग्रीगेटर का, जिसमें उसका अकाउंट है, वहां जाकर वहां ये इंफॉर्मेशन बैंक के पास पहुंची। बैंक के बाद ये इंफॉर्मेशन रेज होगी टू द कंसर्न अथॉरिटी, जो कि रेगुलेटर है या जो सर्विस प्रोवाइडर यूपीआई का, दैट इज एनपीसीआई। जैसे ही एनपीसीआई पे रिक्वेस्ट पहुंची, एनपीसीआई ने रिक्वेस्ट रेज की किसको? आपके कस्टमर के बैंक को। कस्टमर के बैंक से ऑथोराइजेशन हुआ, ऑथोराइजेशन का रिस्पांस मिला, एनपीसीआई ने ऑथोराइजेशन का रिस्पांस दिया और पीए ने क्या किया? पेमेंट एग्रीगेटर ने फंड्स को रिसीव कर लिया अपने एस्क्रो अकाउंट में। और जैसे ही फंड्स एस्क्रो अकाउंट में रिसीव हुए, हाथों हाथ यहां पर मर्चेंट के पास एक एक्नॉलेजमेंट आ गई कि आपकी पेमेंट रिसीव हो चुकी है, एंड द सेम एक्नॉलेजमेंट इज गिवन टू द कस्टमर एज वेल। और जैसे ही ये अमाउंट रीच होगी पेमेंट एग्रीगेटर के एस्क्रो अकाउंट में, तो वहां से ये अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर कर दी जाएगी टू दी रिस्पेक्टिव बैंक ऑफ द मर्चेंट, जहां पर मर्चेंट का अकाउंट है, या आप ये कहें कि डायरेक्टली जो फंड्स है दैट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द मर्चेंट्स अकाउंट। तो ये कुछ बेसिकली ऐसा दिखता है, कुछ इस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन रिसेंटली आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर के कॉन्टेक्स्ट में अपनी जो कंडीशंस है उन कंडीशंस को रिवाइज किया है। अब वो क्या क्या रिवीजंस हैं, क्या नए चेंजेस आए हैं, क्या पुराने चेंजेस आए हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आ गया? चलो
नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पेमेंट एग्रीगेटर वाला मास्टर डायरेक्शन. अब इस मास्टर डायरेक्शन की शुरुआत कहां से हो रही है? सो बेसिकली आरबीआई हैज कम अप विद अ मास्टर डायरेक्शन फॉर द रेगुलेशंस ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर. इस मास्टर डायरेक्शन में इट हैज बीन वेरी क्लियरली डिस्कस्ड दैट who all are eligible to set up or who all are eligible to operate as a payment aggregator. If a payment aggregator is operating, what are the conditions on the payment aggregator, how the funds are transferred, how the escrow account is maintained, how the entire process is performed. ये सारी की सारी बातें इस particular master direction में बहुत clearly mention की गई है, which we will be surely discussing today. ठीक है. अब सबसे पहला पॉइंट आया सर, दिस डायरेक्शन वाज इशूड ऑन 15th of September ऑब्वियसली बाय आरबीआई, व्हिच मींस द रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर इज आरबीआई अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007. बट these payment aggregators are also regulated by RBI as per Foreign Exchange Management Act 1999. क्यों? क्योंकि ये जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, they are not only allowing you to make the payment intra country, they also allow you to make the payment inter country. That means if you are purchasing a product which is showcased in US and you are delivering that product in US only, or even you are importing it to India, then you are making that payment which will be an inter-country payment. That transfer is also provided, that service is also provided by a payment aggregator. One of the main or famous example which operates on in the international level for the inter-country payments, that is PayPal. दैट इज पेपाल. तो आप इंडिया में बैठ के यूएस में पे कर सकते हैं, यूएस में बैठ के इंडिया में पे किया जा सकता है. तो ये जो पेमेंट एग्रीगेटर की मास्टर डायरेक्शन है, इट इज एप्लीकेबल ऑन, सर, इट इज एप्लीकेबल ऑन all the organizations which I will be discussing, but it is under Payment and Settlement System Act as well as Foreign Exchange Management Act 1999. अब ये नई डायरेक्शंस को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? सो दीज न्यू डायरेक्शंस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड in order to consolidate with a single master direction for payment aggregator, including and updating all the past guidelines. So एक guideline आई थी 2020 में, then this guideline supplementary directions were there in 2021, then special rules for cross-border payment aggregators were introduced, then finally in April 2024 RBI has come up with the rules for physical POS. Physical POS payment aggregators क्या होते हैं? So those payment aggregators which provide you with the machines, आपके दुकान के बाहर जहां से आप मशीन के जरिए कार्ड स्वाइप करा के अपनी पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं. तो इसके रिगार्डिंग एक ड्राफ्ट आया था, आरबीआई ने दिया था इन अप्रैल, फिर उसके बाद पब्लिक का फीडबैक लिया गया, एंड आफ्टर द पब्लिक फीडबैक द फाइनल गाइडलाइंस हैव बीन इशूड व्हिच वी आर डिस्कसिंग टुडे. अब क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट वाज द नीड फॉर द कंसोलिडेशन? विद द रैपिड फिनटेक ग्रोथ, multiple guidelines have been created, but they are fragmented. Now RBI has consolidated all the rules in one master direction, which covers the payment aggregator physical, that provides you with point of sale machines, as well as payment aggregator online, which provides you with payment accepting capability through the online platform. Now the question is, these directions, they are going to be applicable on which all organizations? If I talk about which all organizations, then my answer to this particular question is these guidelines are applicable on all the payment system providers, payment system participants, as well as all the authorized dealers, as well as the commercial banks. So it is applicable on all the payment system providers, it is applicable on all the payment system participants, on all the authorized dealer banks, as well as the all scheduled commercial banks. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट? आई गेस इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, कोई डाउट यहां पर नहीं होगा. अगर यहां तक क्लैरिटी है, जस्ट गिव मी यस सर. थोड़ा सा हैवी लगेगा आपको इनिशियली कि ये क्या है, लेकिन द मोमेंट वी विल कंप्लीट इट, यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर दैट हाउ एक्चुअली द पेमेंट एग्रीगेटर्स वर्क, और उसके बेसिस पे कोई भी डाउट अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट फॉर श्योर. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आ गया, यहां तक क्लियर है? ठीक है. नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. Harini, I will be taking your doubt, but in the end of the session, payment aggregator और gateway में क्या difference है, I'll let you know. Give me some time. Now let's talk about some of the important definitions. पहली important definition, payment aggregator क्या है, बता चुका हूँ. A third party entity which collects customer payments on the behalf of merchant
and transfer them to the merchant's account. तो ऐसी थर्ड पार्टी जो मर्चेंट के बिहाफ पर पेमेंट को कलेक्ट करती है फ्रॉम द कस्टमर एंड देन फाइनली दैट कलेक्टेड पेमेंट इज ट्रांसफर्ड इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द मर्चेंट, दैट इज नोन एज पेमेंट एग्रीगेटर. अब ये जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, they are classified into different categories depending upon the services they provide. So if a payment aggregator is providing you the service which enables you to accept funds, which enable you to accept payment from your customer through physical mode, offline mode, with the help of point of sale machines, with the help of card machines, so that the card of the customer can be swiped and the payment can be received. So that is known as physical. That is known as physical payment aggregator. So the transaction at physical point of sale, example swipe machines or QR code at the stores, they all fall in this particular category. Second one is payment aggregator online, that is the remote transactions via application or websites such as Razorpay, PayU, PhonePay for online purchases, that will be termed as payment aggregator online. And the third one is payment aggregator cross border, which handles the cross border e-commerce trade, which include inward transactions as well as outward transactions. Now the question is, what is the difference between inward and outward transactions? Please check it on the screen. I'm so sorry. I guess audio video एकदम से बंद हो गया था, but I guess now it's fine. हाँ, so I was talking about the inward and outward transactions. So inward and outward transactions की अगर हम बात करें तो foreign customers buying from Indian merchants, that will be inward transaction. अगर foreign का कोई कस्टमर है जो इंडिया के सेलर से परचेज कर रहा है, वो पे करेगा, so that will be inward transaction coming in India. Outward transaction means when Indian buyers they are purchasing from overseas sellers, that will be an outward transaction. अब पेमेंट गेटवे क्या है सर? पेमेंट गेटवे जो है that provides only and only the tech infrastructure but doesn't handle the funds. For example, bill desk, ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ it provides you the tech infrastructure, that is API, routing, encryption, लेकिन ये जो complete transaction, the way payment aggregator is handling, that is not done by the payment gateway. उसके बाद आते हैं एक escrow account. So what is an escrow account? When there are two parties, P1 and P2, they come under a contract, but they both do not trust each other. So what they do is they sign an escrow account, or they sign an agreement, and they open up an escrow account, and all the relevant funds, all the relevant documents, all the relevant assets are stored in this escrow account, and it's a kind of safety security for both the parties. If any one of the party do not fulfill the contract obligations, in that particular case, the second party which has witnessed the breach of contract can receive the assets or can receive the claims from this escrow account. So that is the reason it is important. ठीक है जी, clear हुआ ये point? Moving on to the next point, core portion, lowest average balance over 26 fortnights in escrow, eligible to earn interest.
is known as core portion. So what is core portion escrow? core portion escrow का मतलब है कि आपके जो लास्ट 26 फोर्टनाइट्स है, फोर्टनाइट का मतलब 15 डेज इन वेरी सिंपल टर्म्स, तो ये जो आपकी 26 14 नाइट्स है या फिर 26 इंटू 15 डेज है, उनके उस पूरे टाइमलाइन में जो भी आपका लोएस्ट एवरेज बैलेंस था, वॉट एवर वॉज योर लोएस्ट एवरेज बैलेंस, ऑन उस लोएस्ट एवरेज बैलेंस पे यू कैन अर्न द इंटरेस्ट एज वेल, विच इज अ बिगेस्ट रिलीफ फॉर द पेमेंट एग्रीगेटर्स एज एस्क्रो अकाउंट, अदरवाइज दिस अकाउंट वाज नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग। तो इसे मार्क कर लेना कि सर असल में तो ये जो एस्क्रो अकाउंट है ये काम कैसे करता है, इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है। सर एस्क्रो अकाउंट का रोल बड़ा सिंपल है कि जब कस्टमर के बैंक से फंड्स रिसीव होंगे, those funds will be stored in this or credited into this escrow account. From this escrow account only funds will be transferred into the merchant account. Funds will be transferred into the merchant account. अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, तो इन दोनों ही केसेस में जो एस्क्रो अकाउंट का काम है वो क्या है सर, एक मीडिएटर का काम है। और ये जो एस्क्रो अकाउंट है इसमें फंड्स या बैलेंस ऑफ एस्क्रो अकाउंट इज वॉलेटाइल इन नेचर, तो इसमें जो भी डिपॉजिट है, जो भी फंड्स पड़े हैं वो पहले नॉन इंटरेस्ट बेरिंग थे, लेकिन अब कह दिया कि जो आपका कोर पोर्शन है, यानी पिछले 26-15 दिनों की जो लोएस्ट एवरेज बैलेंस है, उस पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। दिस इज द लेटेस्ट एड ऑन विच हैज बीन डन, यू हैव टू मार्क इट। अगला पॉइंट आता है, द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन, फिजिकल चेक ऑफ मर्चेंट्स प्लेस ऑफ बिजनेस to prevent fraud and shell merchants. तो यहाँ पे contact point verification is also done. Generally in case of when you're going for a point of sale machines, this kind of verification is done, and sometimes in case of online also they go for the contact point verifications if required. Authorization की बात करें या कैपिटल रिक्वायरमेंट की, तो आई होप जो बेसिक डेफिनेशंस है, पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल, पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, पेमेंट गेटवे, इनवर्ड ट्रांजैक्शन, आउटवर्ड ट्रांजैक्शन, एस्क्रो अकाउंट, कोर पोर्शन एंड कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्रिस्टल क्लियर होंगे। इफ एवरीथिंग इज क्लियर टिल दिस पॉइंट, जस्ट गिव मी यस सर सो दैट आई कैन मूव अहेड। If it is clear till this point, just give me yes sir so that we can move ahead quickly, guys. We don't have whole day. Just give me the answer in the comment section quickly. ठीक है जी, अब हम बात करेंगे ऑथोराइजेशन एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट की। देखो, अगर तो भाई आप एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो या फिर you are a small finance bank, then you can easily operate as a payment aggregator without requiring any separate authorization, any separate approval from RBI. ठीक। सेकेंड पॉइंट, रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें, बैंक्स दे आर ऑलरेडी डायरेक्टेड अंडर द Banking Regulation Act 1949 as well as Payment and Settlement System Act 2007. So there is no need to seek more authorization, more approval, more license from RBI if you want to operate as a payment aggregator. So banks, they can offer payment aggregator services. No one is going to stop you. Second point, if you are a non-banking facility, that means you are a fintech or an NBFC or maybe a startup, in that case, must apply to RBI through online authorization portal, which has been launched in 2022 for payment aggregator as well as payment gateway applications. Must be incorporated under the Companies Act 2013. That means अगर आप apply कर रहे हैं, you must be a company which must be registered under the Companies Act 2013. If already you are regulated under any other financial regulator, for example, एक stock exchange है, and that stock exchange wants to seek the license of payment aggregator, or maybe an insurance company wants to seek the license of payment aggregator, then in that particular case, you should have no objection certificate. You should have no objection certificate from your current regulator, maybe SEBI or IRDAI, and when NOC is received, then only RBI will consider your application, and then RBI may give you the license to operate as a payment aggregator or not. If
If already regulated by another entity, then you need no objection certificate, which is mandatory before you apply in front of RBI. ठीक है जी, क्लियर हो गया. अब जैसे मैं कहूं रेजर पे, फोन पे, कैश फ्री, दे आर डायरेक्ट आरबीआई ओवरसाइट्स, बट for example an insurance company or a stock exchange or any other body which is already regulated by any other regulatory body, they need no objection certificate from the concerned body, then only they will be allowed to operate as a same. अब पॉइंट आता है, अगर हम पास्ट अपडेट्स की बात करते हैं, मार्च 2020 में गाइडलाइंस दी गई, आरबीआई ने पहली बार गाइडलाइंस दी थी फॉर फर्स्ट इंट्रोड्यूस पेमेंट एग्रीगेटर ऑथोराइजेशन फ्रेमवर्क. तो ये जो पेमेंट एग्रीगेटर का ऑथोराइजेशन फ्रेमवर्क है, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बैक इन 2020. इनिशियल नेट वर्थ रिक्वायरमेंट was 1500 crores at the time of application and it should be 25 crores within 3 years. इसका मतलब if you are a company and a non-bank entity, you are applying for RBI or you are applying in front of RBI to seek a license of payment aggregator, then at the time of application, your net worth should be at least 15 crores. And after 3 years of this approval, your net worth should be 25 crores. This is nothing new. It was introduced in 2020. But in 2020, when it was introduced, there was a unrest among the payment aggregators, and many of the payment aggregators, they came up with the request in front of RBI that it won't be possible for us to reach to this level very easily, so we need some time. RBI said, okay, tathastu, don't worry. So RBI has extended the timelines over and over. RBI has extended the timelines over and over कि आज कल परसों ऐसे करते करते RBI extend करता रहा, लेकिन अब everything is done. RBI has come up with a deadline. Now RBI has come up with a clear deadline कि payment aggregators, they must fulfill these conditions. If not, then they have to stop their operations. They have to register, or they have to surrender their registration, or they have to surrender their license. They won't be allowed to operate as a payment aggregator. So many fintechs struggled. RBI gave multiple deadlines, extension for compliance, but now RBI has come up with the final deadlines. There is one more point related to the same, that is a preference share. I hope you must have heard about equity instruments. Equity instruments are the instruments which allow the investor to participate in a company as an investor, as a partner of a company. And these equity instruments, they are classified as equity share or preference share. If I talk about equity share, what is an equity share? Sir, equity share basically means when an investor come in front and they invest in a company and they will be receiving the profits out of the company's profit. But what is a preference share? So it is a special type of equity instrument in which your return is predefined. For example, you are investing, they say your return will be predefined, that is 10% per annum, which means if company will earn less than 10% per annum or more than 10% per annum, you may get 10% only, because if it is a cumulative preference share, in that particular case, even the company is earning 5% per annum, the moment company will earn more than company will earn more in the near future. मान लो अगले साल कंपनी ने 20% कमाया, तो भैया 10 तो आपको देना ही पड़ेगा, और पिछला जो 5 बचा है वो भी वापस देना पड़ेगा या वो भी पे करना होगा इन केस इट इज अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. तो ये कंडीशंस है. प्रेफरेंस शेयर के केस में यू डोंट गेट दी वोटिंग राइट्स, बट यू गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस इन केस ऑफ लिक्विडिटी. यानी कंपनी अगर बंद होगी, कंपनी को लिक्विडेट किया गया, तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसा जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, और अगर कंपनी को लॉस हुआ तो लास्ट में जो लॉस है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बेयर करेगा. पहले जो लॉस है इट विल बी बेयर्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर अगर इतना ही बेनिफिट है तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती ही क्यों है, और अगर इतनी ही इश्यूज हैं तो कोई प्रेफरेंस शेयर खरीदता क्यों है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी इज डूइंग रियली वेरी वेल, है ना, company is in profit, it's doing really very well, everyone is running behind to purchase the shares of the company. The moment company will issue the preference share at the rate 20%, सबको पता है कि the company has a
track record of more than 40% profit in the last 10 years. So if it is issuing the preference share at 20%, for sure 20% return to fixer. So everyone will again run behind to purchase the company shares. On the other side, if company is in loss, no one is willing to invest in the company as an equity shareholder, they may consider at a point of preference share, if it is offered, let's say at a decent return 10%, and that too it's a cumulative, that means whether we earn less than 10%, we will be paying back your cumulative profits once we earn more than the required value. So in both the cases, it is a win-win situation for the investor. Similarly, it is a win-win situation for the company as well. How? कंपनी के केस में अगर मैं बात करूं, अगर कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है, तो कंपनी डू नॉट वांट टू शेयर इट्स प्रॉफिट विद द investors, so company will not go with equity shares, company will rather go with preference share where a limited profit is shared. If company is in loss, company know that no one is going to invest, so company is ready to give extra benefits because company want to raise the funds so that company can expand its operations, and the moment company expands its operation, the moment company expand its operation, it will go ahead, it may come up or it may overcome the losses or overcome the current situation in which the company is struggling. ठीक है जी? Is this point clear? Any doubt till this point? अब क्वेश्चन ये आया कि सर ये जो शेयर्स है, वी टॉक अबाउट द प्रेफरेंस शेयर. देखो, नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स बेसिकली मींस द कंपनी डज नॉट डिक्लेयर अ डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू द inadequate profit or decision of the board. The right to receive dividend for the last year lapses, and that particular profit is not carried forward. That is a non-cumulative preference share. But what is a cumulative preference share? Sir, it means the arrears, they get carried forward and they must be paid before the equity dividend. So risk for investor in cumulative is low, and attractive, obviously cumulative is more attractive in comparison to non-cumulative. खुशबू, शायद आपको दोनों में डाउट था. I hope the doubt is clear now. I was correct. Cumulative means आज अगर प्रॉफिट कम भी है कंपनी का, तो जब कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा, you will be paid with it. But in case of non-cumulative, it will not be carried forward. Your arrears do not accumulate, they lapses if not declared. क्लियर हो गया जी? ठीक है. अगला पॉइंट. अब पॉइंट ये है कि सर आपने कहा नेट वर्थ. What is net worth? If someone asks me how you define a word net worth, तो मैं क्या आंसर दूं? आप बताओ मुझे जरा. What should be my correct answer for a question? What is net worth? See, whenever we talk about net worth, it's again a very important term, और इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मेट्स में एक्सप्लेन भी किया जाता है. बट इफ आई गिव यू अ वेरी जनरल एंड अ सिंपल discussion on net worth, then I would say net worth basically means what's a net worth? If someone asks me, we have to define it this the word net worth in such a manner that net worth is actually, no, it's not total asset. That is absolutely wrong. It's not total asset. Please make this point very clear in your mind. It's not a total asset. Anyone else, guys? अगर आपको इसमें भी इशू आ रहा है तो आई शुड वेट. हाँ जी, बताओ. एनीवन एल्स? इट्स नॉट टोटल एसेट्स. अरे भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है. व्हाट इज नेटवर्थ? So net worth represents the financial strength of the business, individual, or maybe any entity. So net worth in very simple terms is total assets minus total liabilities. So basically net worth is total assets minus total liabilities. Individual net worth talks about the personal assets like your bank balance, property, share, jewelry, minus the personal loans, mortgages, credit card, and whatnot. On the other side, corporate net worth is basically termed as shareholders fund or owners fund. So it is derived from the company's balance sheet where we subtract the total liability from the total asset. अब ध्यान से सुनना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि the preference shares, they are the part of what? So they are the part of equity instruments. They are the part of equity instruments, and if they are the part of equity instruments,
they should also be included while making these calculations. My answer is correct. So in that particular scenario, whether the preference shares will be included while calculating the net worth or not, this question was unanswered earlier, but now RBI has given a correct answer and a clear answer. RBI says that if you have a convertible preference share, so the convertible preference shares issued by a company will be included in net worth. Convertible preference share means which is surely going to be converted into equity share as pre-decided. But the non-convertible preference shares will not be the part of net worth. So RBI came up with the statement that non-bank payment aggregators, they should maintain minimum net worth 15 crores initially, rising to 25 crores within 3 years. It was unclear whether the preference share could be included in this calculation or not. Many fintechs, they had raised capital through compulsory convertible preference shares, which would eventually turn into equity shares. So therefore, RBI in 2025 master direction has clearly mentioned that the convertible preference shares will be counted as equity while calculating the net worth, but non-convertible preference shares won't be included. So what will be the benefit? So this clarifies that the regulatory certainty to fintech that rely heavily on venture capitals or preference shares or preference equity funding via compulsory convertible preference shares, it reduces the compliant disputes and ease out the fundraising. Clear हो गया point? तो दो चीजें, पहली चीज क्या कि अगर आप एक नॉन बैंक एंटिटी है, if you are a non-bank entity and you want to open up a payment aggregator, then in that particular case, your initial net worth should be 15 crores at the time of application or at the time of applying, and it should rise to 25 crores in next 3 years. On the other side, while calculating the net worth, compulsory convertible preference shares will be included under the category of equity. And what is equity? So that is total asset minus total liability. That is a point. क्लियर हो गया जी, समझ आ, ठीक है. सो अब इन सारी बातों का सिग्निफिकेंस क्या है? सर सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? पेमेंट एग्रीगेटर्स है, सो दे आर रिसीविंग फंड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द मर्चेंट्स. Merchants should trust them. When you trust anyone, so if the individual has big pockets, so we trust the payment aggregator, we trust Razorpay because it has deep pockets. So ensure that the company is financially strong and compliant payment aggregators, they should operate in India. It protects the merchants and customers by reducing the risk of fly-by-night fintech. Fly-by-night fintech का मतलब हिंदी वाला वर्ड है, रातों रात भाग गया, रातों रात भाग गया वाला वर्ड है, तो रातों रात भागने वाली फिनटेक से बचाएगा. Align with RBI's approach to same activity, same regulations, whether done by banks or fintechs. तो ये RBI के अप्रोच के साथ अलाइन करेगा. ठीक है कि पेमेंट एग्रीगेटर with the net worth of 15 crores, it's okay, it's a strong enough, let's allow them to operate. और इनमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे. Banks as well as the payment aggregators, they will be operating in a uniform manner. Clear हो गया? Moving on to the next. The next point talks about the governance framework. What is this governance framework? So governance framework, governance basically means the management. The management who is responsible to govern an entity, who is responsible to run an entity, who is responsible to manage the day-to-day operations of a company, of an entity. So fit and proper criteria for promoters and directors. RBI require that all the promoters, directors, key managerial personals of a payment aggregator, they should meet the fit and proper test conditions. No criminal conviction, no insolvent or declared bankrupt, not barred by any financial regulator, and must have record of financial integrity, competence and sound reputation. It's quite obvious. ये तो easy है. दूसरा point है RBI की supervisory powers क्या है? Because RBI is the regulator of payment aggregators. So even if the promoters or directors, they formally meet the criteria, RBI reserve the final authority to reject or approve the appointment. RBI holds the power to reject or approve the appointment, seek removal of directors not meeting the criteria. RBI चाहे तो किसी भी डायरेक्टर को हटवा सकता है बोलकर इस पेमेंट एग्रीगेटर में कि भैया अपने इस वीपी को हटा लो, ये सही काम नहीं कर रहा. Conduct background check and use
regulatory intelligence if required. So these are the conditions which are need to be fulfilled before applying in front of RBI to seek a license to operate as a payment aggregator. अगर कुछ चेंज होता, मान लो आज एक कंपनी है, उस कंपनी ने एक पेमेंट एग्रीगेटर बनाया, अब इस कंपनी की जो ओनरशिप है वो चेंज हो गई या इस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो गई, तो क्या होगा? एनी टेक ओवर, एक्वाइजिशन और चेंज इन कंट्रोल ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर दे मस्ट रिक्वायर आरबीआई अप्रूवल. विदाउट आरबीआई अप्रूवल नहीं हो सकता. कंट्रोल कैन मीन चेंज इन शेयर होल्डिंग, मेजॉरिटी स्टेक्स चेंज हो रहे हैं, या फिर change in voting rights, या फिर new management is stepping in to manage the entire company to operate. So in that particular scenario, RBI approval is required. Without RBI approval, takeover, acquisition या change in control नहीं हो सकता for the payment aggregators. अगला point आता how these payment aggregators they conduct their business. How they conduct their business. I hope this point is clear. गवर्नेंस वाला, तो गवर्नेंस में दो चीजें, आपके जितने भी प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, की मैनेजरल पर्सनल्स हैं, दे शुड हैव फुलफिल द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया. सेकेंडली अगर कुछ चेंज होगा आपके ओनरशिप में, वो आरबीआई के अप्रूवल से होगा, और आरबीआई हैज अ पावर, और आरबीआई स्टिल रिजर्व्स द फाइनल अथॉरिटी टू रिजेक्ट अप्रूव अपॉइंटमेंट, सीक रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर एंड कंडक्ट द बैकग्राउंड चेक वेन एवर रिक्वायर्ड. अब बात आई हाउ द पेमेंट एग्रीगेटर्स दे डू देयर ऑपरेशंस. पहला है डिस्प्यूट मैनेजमेंट. पेमेंट एग्रीगेटर मस्ट एस्टैब्लिश अ रोबस्ट grievance redressal mechanism so that public complaints can be entertained and resolved as soon as possible. Payment aggregator should define the refund timelines, chargeback handling, reversal of disputed payments, and escalation process must be clearly defined. तो पहली चीज तो ये कि if you are owing a company and now you want a payment aggregator license, then it's quite obvious. You will be dealing with the public, you will be receiving the funds from the public, you will be forwarding those funds to the merchants, and वहां पर आपके पास बहुत सारी complaints आएंगी. There is no, I would say, doubt in this. Now, when the complaints will come, you must have a robust grievance redressal mechanism which should redress the public grievances. You should define the refund timelines, you should define the chargeback handling कि भैया अगर मैं आपके पैसे जो आपने conflict हुआ, आपने जिसको पैसा दिया उसमें कुछ इशू हुआ, अब आप कह रहे हैं कि you want the reversal of the disputed payment, then I will be charging my fees for providing you that particular service. Each payment aggregator must appoint grievance redressal officer and publish their detail with an escalation matrix. तो जो payment aggregator है वो define करे कि how you can escalate your complaint, और वो जो पूरा process है that should be available on your website. Secondly, you should share the details of your grievance redressal officer openly on your platform so that he or she can be easily reached by the public. Why this is important? It will protect customer in case of any failed, duplicate or fraud transaction, enhance trust in digital payments, aligns with RBI's 2019 directions on turnaround time for failed transactions. So it says that RBI asks everyone, all the institutes which are operating, which are involved in digital payments, that in case of failed transaction, funds should be credited back into the account of the sender or in the account of the payer within 5 days, generally. Within 5 days, generally. Next point is security and risk management. Now, this security and risk management, in this case, payment aggregators should fulfill the compliance, the norms which are set under payment card industry data security standards. So global security standards for storing, processing and transmitting the cardholder data. So payment aggregator should fulfill all those conditions. Payment aggregator should also ensure secure software application handling the payments, which means payment card industry software security framework, which ensures secure software application handling the payments. So all the payment aggregators, they must ensure merchant infrastructure. They must ensure that merchant infrastructure also complies. That means the merchant infrastructure fulfill
all these conditions, that is the payment card industry data security standards are fulfilled, payment card industry software security framework are fulfilled. Then there is an annual cyber security audit must be conducted by CERT in paneled auditors. What is the CERT? Any idea, guys? Can you give me the full form for CERT? So यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि सर for cyber security review or for the cyber safety review, for the cyber safety review or for cyber security, there is a audit done, and this audit is need to be done on annual basis. That means the frequency of the audit is annual. That means once in a year the audit is need to be done by the empaneled auditors. What is the term CERT over here? Any idea, guys? What is the term CERT over here? So it is Indian Computer Emergency Response Team. It is basically CERTIN. ये देखो, sorry, CERTIN, which is computer, which is क्या कह रहा था, हाँ, Computer Emergency Response Team, Indian Computer Emergency Response Team, which is under the Ministry of Electronics, Information and Technology, mandates annual cyber security audits for the critical entities. That is a point. ठीक है जी, क्लियर हो गया ये पॉइंट. अगला पॉइंट क्या कहता है? It includes system audit, it includes vulnerability assessment and penetration test. अब ये vulnerability assessment and penetration test का क्या मतलब है? Sir, it is basically a test which identify the weakness in the system as well as the software. Penetration test, basically it's a ethical hacking which is done to exploit vulnerabilities and assess resilience. So basically ये जो vulnerability assessment and penetration test है, यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि आपकी साइट कितनी हैकेबल है और उसमें जो इश्यूज है उसे रिजॉल्व किया जाए. और vulnerability assessment का मतलब है the weakness in the system as well as the software is checked. So remember that annual cyber security audits. अगला point very important. RBI has mandated that all the payment data to be stored only in India. और ये अभी नहीं कहा RBI ने, this was said by RBI in April 6, 2018 itself. So payment aggregators, they must fully comply this point, and this is not only for payment aggregators, it's general. All the regulated entities of RBI, they should maintain, they should store the data related to payment in India only. ऐसा नहीं कि आपका जो data store हो रहा है वो इंडिया के बाहर किसी cloud में store हो रहा है, that is not allowed. So even if the data is processed abroad, मान लो ट्रांजेक्शन इंडिया के बाहर हुई है, still then a complete copy must be stored in India, aimed at data sovereignty as well as fast regulatory access during investigation. So इससे क्या होगा सर? Customer will get protected from the frauds and cyber security. It will prevent data misuse by the foreign entities, and undoubtedly it will support India's cyber security and sovereign objectives. इसमें कुछ general directions है. First one, payment aggregator cannot run marketplaces, which means Razorpay in near future cannot operate as a marketplace like Amazon or Flipkart in order to prevent conflict of interest. क्योंकि अगर Razorpay ने दुकान खोल दी और Razorpay ही रिस्पॉन्सिबल है टू रिसीव द फंड्स, तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा. मर्चेंट और कस्टमर, दे आर दी बेसिकली द कस्टमर्स ऑफ द Razorpay. अब यहाँ पर अगर Razorpay खुद ही मर्चेंट बन गया तो यहाँ पे पॉइंट आ गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट इज नॉट अलाउड. सो पेमेंट एग्रीगेटर्स, दे आर नॉट अलाउड टू सेट अप अ मार्केट प्लेस. मर्चेंट डिस्काउंट रेट, व्हाट इज दिस मर्चेंट डिस्काउंट रेट? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है. जब भी कभी आप कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग अ कार्ड पेमेंट, आपने बहुत बार सुना होगा कार्ड पेमेंट करोगे सर तो 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. ये जो 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, दिस इज बेसिकली मर्चेंट discount rate. These are the charges which are charged. So merchant discount rate is basically the fees paid by merchant to payment aggregator or banks for processing the payment. तो यहाँ पे ये जो कार्ड पेमेंट 2% की है, जो मर्चेंट आपसे चार्ज कर रहा है, मर्चेंट अपने लिए चार्ज नहीं कर रहा, उसको पता है कि ये 2% जो है वो तो बीच में मीडिएटर ही रख लेगा, वो तो Razorpay रख लेगा, तो इसको अपनी पॉकेट से देने की बजाय पब्लिक से दिलवा दो. सो दैट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट. अब ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट वर्ड कैसे आया? मुझे लगता है आप में से किसी को पता होगा, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि सर एक तरफ डिस्काउंट की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो चार्जेस की, ये दोनों कैसे अलाइन है? इस चीज का मतलब समझते हैं, देखना जरा. इस चीज का मतलब ये है
आरबीआई ने कहा एक शॉपकीपर है, ठीक है, शॉपकीपर ने एक प्रोडक्ट डिसाइड किया कि मैं कितने का बेचूंगा, 1,000 रुपए का, विच इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब इस 1,000 रुपए में शॉपकीपर हैज एडेड its cost price, that is the cost of the product, as well as added the cost of operation, as well as added the payment charges, है ना, पेमेंट चार्जेस। अब मान लो ये जो पेमेंट चार्जेस है ये 2% है। अब शॉपकीपर के पास एक कस्टमर आया, उसने कहा मैं कार्ड पेमेंट करूंगा, शॉपकीपर ने कहा 1,000 रुपए दे दो। शॉपकीपर के पास एक इंडिविजुअल आया, कहता मैं कैश में पेमेंट करूंगा, तो गवर्नमेंट या ये टर्म बनाने वाले ये सोच रहे थे कि जो आपका शॉपकीपर है वो कहेगा सर 2% कम दे देना, आप ऐसा करो 980 रुपए दे दो, मैं आपको 2% की छूट दे रहा हूं। उसने पूछा क्यों? कि सर देखो 20 रुपए जो थे ना वो मैं ऑलरेडी वैसे भी पे करने वाला था किसे, रेजर पे को। अब आपने कैश दे दिया, रेजर पे को पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो मेरे 20 रुपए बच गए और वो 20 रुपए मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया। सो दैट इज बेसिकली नोन एज मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट वर्ड कहां से आया कि सर मर्चेंट ये डिस्काउंट देगा इन केस ऑफ कैश, और अगर आपकी कैश पेमेंट नहीं है देन यू विल बी चार्जिंग द फुल अमाउंट व्हिच हैज बीन मेंशन्ड एज अ मार्क्ड अप प्राइस। मजा आया? मजा आया? ऑनेस्टली बताना, किसी को मतलब पता था क्या आज तक? सारी जिंदगी निकल गई तुम लोगों की पढ़ते हुए, दुनिया जहान की वीडियोस तुम देखते रहते हो, क्या किसी ने आज तक बताया मर्चेंट डिस्काउंट? डिस्काउंट कैसे है? मर्चेंट चार्ज रेट होता मैं मान लेता, डिस्काउंट रेट कैसे? उसके पीछे का लॉजिक ये है, बट वो लॉजिक फेल हो गया क्योंकि भैया शॉपकीपर कहता है मेरा तो सेलिंग प्राइस 1,000 है तो मैं 1,000 ही लूंगा। हाँ, अगर आप कार्ड पेमेंट करोगे तो मैं आपसे 2% एक्स्ट्रा भी मांग सकता हूं, बट दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द एमआरपी एज पर द रूल्स, है ना? ओके, आरबीआई रेगुलेट्स मर्चेंट डिस्काउंट रेट कैप्स फॉर डेबिट कार्ड, यूपीआई, रुपए, और ये जो चार्जेस है दे आर डिसाइडेड बाय आरबीआई। फॉर यूपीआई, डेबिट कार्ड, रुपए, मैं कहूंगा आरबीआई डिसाइड नहीं करता, बट आरबीआई एटलीस्ट कम्स अप विद अ कैप दैट इट शुड नॉट बी मोर देन दिस। सो every payment aggregator should follow the cap. They should charge the charges on the merchant for providing the services below the cap which has been set by RBI. So they must follow the norms, cannot overcharge the merchants. That's what I'm trying to say. अगला point है refund rules. Refund must be made to the original method of payments. That means अगर आपने Myntra से सामान खरीदा, वहां पे ऑप्शन आता है रिफंड इन सोर्स अकाउंट और रिफंड इन गिवन अकाउंट। तो आपने जैसे सोर्स अकाउंट पे किया, अगर आपने यूपीआई किया था, जिस अकाउंट से किया था उसी सेम अकाउंट में फंड्स दोबारा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। सो दैट इज अ पॉइंट। एक्सेप्शन, इफ द पेयर एक्सप्लिसिटली डायरेक्ट्स अदरवाइज देन यू विल बी डिपॉजिटिंग इन सम अदर और रिफंडिंग इन सम अदर अकाउंट, प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फंड डाइवर्जन। तो इसीलिए किया गया कि सर अगर आपके सोर्स फंड में ही पैसा डाला जाए तो सही है, जहां से पेमेंट हुई वहीं पैसा वापस आ गया, वरना पैसे को घुमाना बड़ा आसान है। रोज Myntra से 5 लाख का सामान मंगवाओ, दूसरे अकाउंट में डलवा लो, फिर तीसरे अकाउंट में डलवा लो, फिर चौथे अकाउंट में डलवा लो। तो आरबीआई कहता है कि ऐसा अलाउड नहीं है। 99.9% केसेस में यू शुड गो विद द ओरिजिनल मेथड ऑफ पेमेंट ओनली। एटीएम पिन इन कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन, मतलब नॉट अलाउड एज एन ऑथेंटिकेशन फैक्टर फॉर ऑनलाइन कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन। जहां कार्ड प्रेजेंट नहीं है वहां पे आपका एटीएम पिन इंपॉर्टेंट नहीं है। यू जस्ट गिव योर कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी, ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करो, ट्रांजेक्शन हो जाएगी। कभी भी आपसे पिन नहीं पूछा जाता। बट यही अगर ऑफलाइन ट्रांजेक्शन है तो आपको पिन देना ही पड़ेगा, उसके बिना ट्रांजेक्शन होगी नहीं। सो इंस्टेड 2 फैक्टर ऑथराइजेशन लाइक ओटीपी और बायोमेट्रिक must be used, ensure compliance with RBI digital security mandates. So this is not something which is applicable only on payment aggregators. It is applicable on all the service providers which are providing the payment aggregator services, whether they are non-bank or they are banks. Significance, sir, customer confidence increase होगा in digital payments. It will create uniform business standards for all PAs, whether bank or non-banks. Ensure systemic resilience एंड स्ट्रेंथन द आरबीआई ओवरसाइट। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? इजी? कोई दिक्कत? इजी, कोई दिक्कत? 5th पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, दैट इज कंडक्ट ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस। डिस्प्यूट मैनेजमेंट के लिए सर एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर रख लो। दूसरा पॉइंट है पीसीआई डीएसएस, दैट इज पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क should be fulfilled as per the merchant infrastructure.
Annual cybersecurity audits should be conducted. Data should be held in India only. And lastly, payment aggregators, they are not allowed to open the marketplaces. MDR cannot be above the RBI cap. Refund rules as applicable on all the entities uniformly, that source account में return करो, refund करो funds को, else कस्टमर ने अलग से कहा है, और एटीएम पिन रिक्वायर्ड नहीं है जब आप एक डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वेयर फिजिकल कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड. सो कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन, जस्ट ट्रांजैक्शन में फिजिकल कार्ड प्रेजेंट नहीं है, बस उसके ऊपर लिखी गई इंफॉर्मेशन की मदद से आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं. इन दैट केस एटीएम पिन इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात. सर आज रिसेंटली तो नहीं है कुछ ऐसा अपडेट, बट कैप से नीचे होगा. इट वोंट बी मोर देन द कैप विच हैज बीन सेट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अब बात आती है क्रॉस बॉर्डर की, मतलब इंडिया में यूएस में. इंडिया के एक इंडिविजुअल ने जैसे 17 लॉन्च हुआ आईफोन 17 प्रो, यूएस में अपने किसी दोस्त को कहा कि भैया जाके मेरे ब्याह पे उस शोरूम से जाकर ले आओ, और जब पेमेंट करने की बारी आई तो उसने अपनी कार्ड डिटेल्स दे दी. ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, इस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये जो एप्पल स्टोर है यूएस में, they are accepting the international payments, so this will be what, it's a kind of cross border transaction. Similarly, an individual in US wants to purchase goods from India, तो उन्होंने भी एक पेमेंट एग्रीगेटर के जरिए इंडिया में पेमेंट की. सो इन बोथ दीज केसेस दीज पेमेंट्स आर नोन एज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, इनवर्ड पेमेंट और इनवर्ड ट्रांजैक्शन एज वेल एज आउटवर्ड ट्रांजैक्शन. अब टेक्निकली इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, इसमें काफी चीजें हैं जो आपको समझ आएंगी, मजा भी आएगा. देखो सर, एक है हमारी फ्लिपकार्ट, ठीक है, उसका पेमेंट एग्रीगेटर है रेजर पे, और एक इंडिविजुअल है एलेक्स हु इज इन यूएस हु इज परचेजिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट इन इंडिया. सेकेंड इज राम in India who is purchasing from Apple store in US, and the payment aggregator is PayPal. तो अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे भी जो पेमेंट एग्रीगेटर है दैट इज द सेम, दैट इज रेजर पे. अब यहाँ पे क्या हुआ सर, इंडिया से पेमेंट गई एप्पल यानी यूएस से पेमेंट आई इंडिया. ठीक है, अब इस केस में अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये दोनों ट्रांजेक्शन्स रेजर पे सेम अकाउंट में रिसीव करेगा, दैट इज नॉट अलाउड. रेजर पे विल बी हैविंग टू डिफरेंट अकाउंट्स. दिस इज नोन एज आउटवर्ड ट्रांजैक्शन, दिस इज इनवर्ड ट्रांजैक्शन. तो इनवर्ड ट्रांजैक्शन के लिए रेजर पे विल हैव डिफरेंट अकाउंट 1, एंड इन अकाउंट 2 इट विल बी ओनली एंड ओनली डेडिकेटेड फॉर आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस. पहली चीज. दूसरी चीज सर, यहाँ पे नेटिंग नहीं हो सकती. नेटिंग का मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि आज रेजर पे ने एलेक्स के जरिए फ्लिपकार्ट को 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, और यहां हुआ 7 लाख का ट्रांजैक्शन, तो भैया जो नेट ट्रांजैक्शन है वो 3 लाख का, ऐसा नहीं है. 7 लाख अपना अलग सेटल होगा, 10 लाख अलग सेटल होगा. सो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विल बी सेटल्ड, देयर विल बी नो नेटिंग. ऐसा नहीं कि भैया जो आपकी लायबिलिटी है उसमें से आपकी जो ऑब्लिगेशन उसे हटा दो, 3 लाख रुपए पे कर दो, दैट इज नॉट अलाउड. इट्स नॉट एनईएफटी, इट्स लाइक आरटीजीएस. याद होगा, आरटीजीएस इज व्हाट, इट्स अ रियल टाइम पेमेंट व्हिच इज हैपनिंग ग्रॉस सेटलमेंट, और व्हिच इज सपोर्टिंग ग्रॉस सेटलमेंट. इन केस ऑफ एनईएफटी वी हैव नेटिंग. So here, inward collection account used to collect inflows from the overseas customer buying goods and services from Indian merchant. Example, a US customer paying on an Indian e-commerce site, funds first land in Indian collection account. Second is inward collection account का point, it must be opened with an authorized dealer category 1, that is a scheduled bank. No pre-funding allowed, that means only actual customer payments are permitted. कोई pre-funding allowed नहीं है कि सर मैं कुछ पैसा देना चाह रहा हूं, फ्लिपकार्ट में सपोर्ट करना चाह रहा हूं, ना, कुछ खरीदा तो पे करो वरना घर जाओ. दूसरा है आउटवर्ड कलेक्शन अकाउंट, used to route outflows when Indian buyers they purchase
goods services from overseas must also be with authorized dealer category 1. No mingling or mixing with inward flows. It will not be mixed with inward flows. So separate account, easy to trace. No netting off means RBI prohibits netting inward as well as outward payments. ऐसा नहीं है कि received 10 लाख है, फॉरेन बायर से पेमेंट करनी है 7 लाख टू द फॉरेन सेलर तो 3 लाख देकर काम चला लो. दैट इज नॉट अलाउड. ईच एंड एवरी transactions will be settled, each and every transaction will be settled independently, but there is a cap. Cap is each payment aggregator, CB. What is the CB? Cross border transaction is capped at 25 lakhs, applies to both inward as well as outward transactions. It will prevent large value cross border flows being routed through unregulated channel. For higher value trade, merchant must use ट्रेडिशनल बैंकिंग ट्रेड फाइनेंस रूट्स, चाहे फिर वो अलग अलग जो आपकी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है थ्रू द क्लियरिंग सिस्टम लाइक स्विफ्ट. इफ यू आर यूजिंग दिस स्विफ्ट और यू आर यूजिंग यूपीआई समथिंग लाइक दैट, उस केस में यू विल बी अलाउड. लेकिन 25 लाख से बड़ी ट्रांजेक्शन थ्रू पेमेंट एग्रीगेटर विल नॉट बी सेटल्ड. पेमेंट एग्रीगेटर दे मे डायरेक्टली ओन बोर्ड फॉरेन मर्चेंट्स और दे मे पार्टनर विद द ओवरसीज पेमेंट एग्रीगेटर. दैट कैन बी डन. अगला पॉइंट है एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम. आरबीआई सिस्टम that track all the export related forex receipts in India. So merchants, they must close entries once payments are released. So merchant should close the entries once the payment is received. अगला है import data processing monitoring system. Track the import related forex payments. Ensure that all the forex outward remittance correspond to valid import transaction. सिंपल सी बात है कि सर अगर पेमेंट एग्रीगेटर है, जो भी एक्सपोर्ट के लिए पेमेंट हो रही है या जो इंपोर्ट के अगेंस्ट आउटवर्ड पेमेंट की जा रही है, वो दोनों की दोनों शुड बी ट्रैक्ड, शुड बी वेल मेंटेन्ड अंडर एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एज वेल एज इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम. सो पीए मस्ट सबमिट necessary document data to bank so that entries in these can be updated. क्योंकि आपका अकाउंट तो ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 1 के पास है, तो आप कैटेगरी 1 को पूरी की पूरी अपनी सर्टिफिकेशन भेजोगे कि भैया ये है इंपोर्ट ट्रांजैक्शन जिसके बदले में ये पेमेंट करनी है, सर ये है एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन जिसके बदले में एक्सपोर्ट आया है या ये पेमेंट आई है. दैट हैज टू बी शेयर्ड बाय द पेमेंट एग्रीगेटर टू द बैंक. सेटलमेंट इन द फॉरेन करेंसी अलाउड ओनली फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स डायरेक्टली ऑनबोर्डेड बाय payment aggregator commercial payment aggregator cross border. So an Indian exporter selling handicrafts to Germany, settlement can happen in euro or US dollar directly. For others, indirect or outward settlement will always be done in INR. तो अगर आपके अकाउंट में पैसा बाहर से आ रहा है और आप एक कंपनी है, but you are not an exporter, then your settlement will be done in INR. But if you are an exporter, then settlement can be done in the foreign currency because the amount can be utilized for making the import payments as we have discussed n number of times. ठीक है जी, क्लियर हो गया ये पॉइंट. तो स्पेसिफिक रूल्स फॉर पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर में क्या क्या पॉइंट्स हैं. पहला, 2 सेपरेट अकाउंट रखने होंगे इनवर्ड और आउटवर्ड ट्रांजेक्शन के लिए. नेटिंग ऑफ नहीं होगा. ट्रांजैक्शन कैप है 25 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन, इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो. मर्चेंट ऑनबोर्डिंग, चाहे आप डायरेक्टली किसी को ऑनबोर्ड कर लो या फिर आप किसी ओवरसीज मर्चेंट एग्रीगेटर के साथ टाई अप कर लो. उसके साथ साथ यू मस्ट शेयर द डेटा विद द बैंक सो दैट एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम शुड बी अपडेटेड एंड एवरी ट्रांजैक्शन डन थ्रू पेमेंट एग्रीगेटर व्हिच इज अ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन शुड हैव शॉर्ट प्रूफ की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट इस ट्रांजैक्शन के बिहाफ पर या इस सेल के बिहाफ पर किया जा रहा है. मर्चेंट केवाईसी रिक्वायरमेंट, प्राइमरी रेफरेंस आरबीआई केवाईसी मास्टर डायरेक्शन 2016. सो पेमेंट एग्रीगेटर दे मस्ट फॉलो द फुल केवाईसी नॉर्म्स in order to onboard the merchants. Eligibility, turnover, if it is less than 40 lakhs domestic or exporter turnover is less than or equals to 5 lakhs, then you include a simplified process, which means PAN verification, contact point verification, or one officially valid document for the proprietor or authorized person. But if it is more than that, then you have to follow the other steps as well. So all the non-bank payment aggregators, they must register themselves with the Financial Intelligence Unit, required anti-money laundering and combating financing of terrorism compliance. Suspicious transaction reports
should be done by payment aggregator. Cash transaction report should be done by payment aggregator. Cross-border wire transfer reports should be also shared by the payment aggregators to the concerned authorities. Transition timelines till 31st December 2025. Existing merchants, they must be brought under KYC compliance. From 1st January 2026, all new merchants, they must comply with these fully ड्यू डिलीजेंस रूल्स. उससे पहले जो है वो चल जाएगा, लेकिन 1 जनवरी से तो आपको ये फॉलो करना ही होगा. एक्वायरिंग बैंक का क्या रोल है? बैंक वर्किंग विद ऑथोराइज्ड नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर must have a policy for merchant acquisition via payment aggregator. Ensure payment aggregator follow the bank compliance standards and be able to retrieve customer due diligence details of the merchant whenever required. तो भैया जो बैंक है जिसके पास जाकर पहले ऐसा होगा, मर्चेंट आया पेमेंट एग्रीगेटर के पास, मर्चेंट ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की, वही फॉर्मेलिटीज मर्चेंट ने बैंक को फॉरवर्ड की जहां पे मर्चेंट ने अपना अकाउंट ओपन किया टू परफॉर्म द ट्रांजैक्शंस. दीज आर द कंडीशंस व्हिच आर नीड टू बी डन. अब आया escrow account. Non-bank payment aggregators जो है, they should maintain a dedicated escrow account with scheduled commercial bank only, which should ensure segregation of customer funds from payment aggregators own fund, prevents misuse. तो इसमें क्या हो गया, आपको एक अलग से अकाउंट रखना होगा, dedicated account, and that will be in a scheduled commercial bank only. As I said, inward collection account only for inward forex flows, outward collection account only and only for outward forex outflows. Strict rules: no mingling, no netting off between these two accounts, as already discussed. Permitted credits into escrow. Funds can be deposited. Funds कौन से allowed है escrow account में? पहला, customer inflow, refund amount, pre-funding means payment aggregators own or merchant funds to cover settlement that can be allowed to be credited in this account. Promotional credit like cashback, incentives, transfer from other payment aggregators are also allowed because of the condition of settlement. Next we have permitted debits from escrow. Permitted debits from escrow का मतलब क्या है? कौन कौन से रीजन से आप escrow अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो? पहला, मर्चेंट सेटलमेंट के लिए, रिफंड के लिए पेमेंट एग्रीगेटर अपना कमीशन निकाल सकता है, आउटवर्ड ट्रांसफर टू अदर पेमेंट एग्रीगेटर, और थर्ड पार्टी पेमेंट जो आप कर रहे हैं टू द लार्ज मर्चेंट्स ओनली, उस केस में यू कैन विड्रॉ द फंड्स. कोर पोर्शन मींस मिनिमम एवरेज डेली बैलेंस ओवर द लास्ट 26 फोर्टनाइट्स. तो अगर आपका आज का डेली बैलेंस 10 लाख था, तो ऐसे करते करते आपने अगले 15 दिन के लिए डेली बैलेंस निकाला, और ऐसा आपने 15 दिन के लिए किया, फिर उसकी एक एवरेज निकाली, और एवरेज निकालने के बाद जो वैल्यू निकली उस वैल्यू पे यू विल अर्न द इंटरेस्ट ओनली इन केस ऑफ डोमेस्टिक एस्क्रो अकाउंट. अगर आपका एस्क्रो अकाउंट इंडिया के बाहर है, उस पर आपको मिलता है नहीं, उसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है. मर्चेंट सेटलमेंट must follow the payment aggregator and merchant contract. Contract must be fair, transparent and equitable. So for new or existing payment aggregators must migrate to escrow system within 2 months if you are not already running it. Existing balances must be shifted to the new to the new escrow account without any issue. अब इससे जितने भी पुराने रूल्स थे वो खत्म हो जाएंगे. अब इसकी जगह पे सिर्फ एक ही रूल होगा, दैट विल बी अ मास्टर डायरेक्शन फॉर पेमेंट एग्रीगेटर 2025 व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर्स. ठीक है जी, तो ये है कहानी पूरी की पूरी. उम्मीद करता हूं कि एक एक पॉइंट आपको समझ आया होगा. और अब ये जो इमेज मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, I'm pretty sure you must be in a position to now visualize ki how actually the things are going on. Say yes or no. Say yes or no. Maza aaya? Is it clear? If you haven't liked the session yet, quickly hit the like button so that we can conclude the discussion. एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एक एक टर्म को बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है, समझा दिया है. उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हों. ठीक है जी, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें पिछली क्लास से. पहला क्वेश्चन,
State Bank of India has 1 chairman and 4 managing director. True. As of September 2025, SBI chairman is CS Sethi. Yes, sir. He is the chairman. FSIB was constituted in July 2022, which has replaced Triple B. Okay. FSIB works under Department of Financial Department of Financial Services under the Ministry of Finance. What will be your answer? Dekho zara. And the fifth and the last statement is now on your screen, which says that the current FSIB chairperson is Bhanu Pratap Sharma. So this is correct. This is correct. This is correct. So according to me, all the statements are correct. A option should be the correct answer. Agla question. Which of the following correctly reflects the risk and drivers mentioned by different agencies regarding India's GDP growth? Strong domestic demand and government capital expenditure is a driver. Tax cut and GST is a driver. Global trade tensions and tariffs were highlighted as a risk by multiple agencies, including RBI and IMF. True. Fitch highlighted weakness in the rural demand. Na sir, rural demand to strong hai. SBI research noted muted private capital expenditure as a factor that could impact the growth. That is true. So answer is going to be A option. 1, 2, 3 and 5. Fourth statement is wrong. Rural demand तो बल्कि बढ़ रही है और उन्होंने ये भी कहा था कि जैसा चल रहा था projection earlier for your, I would say, monsoon, it is expected that the rural demand will increase further. Next, अगर हम बात करें ADB ने जो सस्टेनेबल टूरिज्म डील की है विद उत्तराखंड, it will support around 87,000 local residents. True. Project include climate resilient infrastructure, nature-based solutions. True. It has provision for inclusive tourism services. True. Waste management, sanitation improvement and disaster preparedness are major components. True. Entire funding. No sir, fund तो entire नहीं है क्योंकि the value is bigger. उसका कुछ हिस्सा अभी मिला. That is correct. So answer is going to be A option. Fifth statement is wrong. अगला question देखो. ADB consider the following. India is the fourth largest shareholder. True. As of April 2025, ADB sovereign lending commitment to India is $59.5 billion. True. Giving you a data. Non-sovereign investment ADB in India stood at $19.1 billion. That is not correct, I believe. Srinivas appointed as this is significant as it is rare for IRS to hold post of ED, usually dominated by IS officers. True. The headquarters is in Manila, Philippines. That is also correct. Why the third statement is wrong? It is $9.1 billion, not $19.1 billion. That is true. With reference to NABARD CDCI for RRBs, how it's going to operate. RRBs operate primarily in urban. No sir, they operate primarily in rural areas. Around 92% of RRB branches. True. CDCI will help RRBs compete with NBFCs. True. Faster and transparent loan dispersal under CDCI is expected to boost financial inclusion. Faster and transparent loan dispersal. Faster and transparent loan dispersal. True. CDCI platform is exclusively designed for RRBs. That is true. So answer is going to be, it is only designed for RRBs, not for private banks. So answer is going to be B option. Answer is going to be B option. Moving on to the next. With reference to the prepaid payment instruments and escrow accounts, consider the following statements. Prepaid payment instruments are instruments that allow purchase of goods, services, fund transfer and remittance under using the stored value. That is true. Escrow accounts are maintained by PPI. Is true. RBI mandated that end of the day escrow balance must always be equal to the outstanding PPI liability. True. Open PPI can be issued only by non-bank fintech companies. Open PPI. That means one is closed. Open means you can even withdraw the cash from the PPI. That cannot be open. That cannot be provided by non-bank fintechs. It can be provided only by the banks. Escrow accounts ensure protection of customer money in case of failure. True. So answer is going to be B option. 1, 2, 3, 5 are the correct answers. Next,
The new microsite is available at Indian currency. True, it provides 360-degree view. It replaces Paisa Bolta Hai. That is true. Microsite only contains textual details. Wrong. A dedicated section of exchange notes is also set up. So answer is going to be B option. 1, 2, 3, 5 are. Got it, guys? I hope each and every point is clear. So I will be looking forward for your feedbacks, suggestions, as well as doubts in the comment section. Thank you so much for joining. Good luck. God bless you all. See you soon. Bye bye. Take care. God bless you.